हेलो पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हाउ आर यू, कैसे हो? एक आप ही आए हो टाइम। 10 बजे स्ट्रीम। हाँ मेरे दोस्त, 10 बजे स्ट्रीम। आगे बढ़े। वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, क्यों पढ़ाना चाहिए भाई पैसों के बारे में? क्या होता है ट्रेडिंग, क्या होता है पैसा, क्या होता है कैश फ्लो, क्यों बताना चाहिए लोगों को? इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। ठीक है। मैं अच्छा हूँ ब्रो, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ यार। ये लोगों को नहीं बताना कि कैसे पैसा बनाना है, ये समझाना है कि कैसे पैसा रखना है। In 1990, Mike took over his father's empire and is, in fact, doing a better job than his dad did. We see each other once or twice a year on the golf course. He and his wife are wealthier than you could imagine. Rich Dad's empire is in great hands, and Mike is now grooming his son, to take his place as his dad had groomed us. In 1994, I retired. I was 47 with my wife Kim. Was 37 retirement does not mean not working. For us, it means that barring unforeseen catalytic changes, we can work or not work and our wealth go ऑटोमेटिकली, चाहे हम काम करें या ना करें पर हमारा पैसा बढ़ता रहे। स्टेइंग अहेड ऑफ इन्फ्लेशन, हम लोग इन्फ्लेशन से आगे बढ़े हुए हैं। मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भिंडी 400 रुपये किलो की हो रही है, कितने की हो रही है। For us, it means that barring unforeseen cataclysmic changes, we can work or not work. Our For us, it means that barring unforeseen cataclysmic changes, we can work or not work, and our wealth grows automatically, staying ahead of inflation. Our assets are large enough to grow by themselves. It's like planting a tree. ये वैसा है जैसे आप ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हो। You water it for years and then one day it doesn't need you anymore. Its roots are implanted deep enough. Then the tree provides shade for your enjoyment. तो ये वैसा ही है कि आप थोड़े थोड़ा चीज़ों को पानी दे रहे हो एक पौधे को, और आखिरी में जाके वो आपको शेड देता है। माइक चूज़ टू रन द एम्पायर एंड आई चूज़ टू रिटायर। माइक ने चूज़ किया कि वो एम्पायर को रन करेगा, मैंने चूज़ किया कि मैं रिटायर हो जाता हूँ। Whenever I speak to group of people, they often ask what I would recommend that they do. How do I get started? Is there a book you would recommend? What should I do to prepare my children? What is your secret to success? How do I make millions? कैसे मैं millions कमाऊँ? कैसे मैं अपने बच्चों को सक्सेस दिलाऊं? क्या कोई बुक रिकमेंड करोगे या फिर आप बताओगे कि कैसे मैं बच्चों को प्रिपेयर करूं? Whenever I hear one of these questions, I reminded of the following story, the richest man businessman. तो देखो, जब भी कोई मुझसे सवाल पूछता था मैं हमेशा उसको बोलता था यार ये वाली कहानी पढ़ो। मेरे दिमाग में ये स्टोरी आती थी, richest businessman. In 1923, a group of our greatest leaders and richest businessmen held a meeting at Edgewater Beach Hotel in Chicago. Among them were Charles Schwab, head of the largest independent steel company, Samuel Insull, president of the world's largest utility, Howard Hobson, head of the large gas company, Ivar Kreuger, president of International Match Company, one of the world's largest companies at that time, Leon Frazier, president of the Bank of International Settlements, Richard Whitney, president of New York Stock Exchange,
Arthur Cotton, Jesse Livermore, two of the biggest stock speculators, and Albert Fall, a member of President Harding's cabinet. 25 years later, nine of these titans ended their lives as follows. Schwab died penniless after living for 5 years of borrowed money. Insull died broke in a foreign land, and Kruger and Cotton also died broke. Hobson went insane. Whitey and Albert Fall were released from prison, and Fraser and Livermore committed suicide. I doubt if anyone can say what really happened to these men. If you look at the date, 1923, it was just before the 1929 market crash and the Great Depression, which I suspect had a great impact on these men and their lives. The point is this: today we live in times of greater and faster change than these men did. I suspect there will be many booms and busts in the coming years that will parallel the ups and downs these men faced. I concerned that too many people are too focused on money and not on their greatest wealth, their education. If people are prepared to be flexible, keep an open mind and learn, they will grow richer and despite tough changes. तो देखो, इंसान को ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसकी आंखें और कान खुले होने चाहिए, उसका दिमाग खुला होना चाहिए हर नई चीज़ को सीखने के लिए. फ़ैन का साउंड ज़्यादा है, मेरी आवाज़ कम है. ओके, मैं अपनी आवाज़ बढ़ा देता हूँ. ठीक है, आंखें और कान खुले होने चाहिए. आई एम कंसर्न दैट मैनी पीपल आर टू फोकस्ड ऑन द मनी एंड नॉट ऑन देयर ग्रेटेस्ट वेल्थ, देयर एजुकेशन. ज़्यादातर लोग पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं, पर किसी को एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है. इफ़ पीपल आर प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल, कीप एन आई ओपन माइंड एंड लर्न, दे विल ग्रो रिचर एंड रिचर. ठीक है, डिस्पाइट टफ टाइम्स, टफ चेंजेस. If they think money will solve problems, they will have a rough ride. Intelligence solves problem and produces money. Money without financial intelligence is money soon gone. Most people fail to realize that in life it's not how much money you make, it's how much money you keep. We have all heard stories of lottery winners who are poor, then suddenly rich, and then poor again. They win millions yet are soon back where they started. Or stories of professional athletes who at age of 24 are earning millions but are sleeping under a bridge 10 years later. देखो, और इसमें ऐसी भी स्टोरीज़ है जिसमें कुछ प्रोफेशनल एथलीट्स 24 साल की उम्र में इतने मिलियन कमा रहे थे, इतने मिलियन कमा रहे थे, बट 10 साल बाद वो एक ब्रिज के अंडर सो रहे थे. तो मतलब ये सोचो कि उन लोगों ने पैसा उड़ा दिया, सही जगह लगाया नहीं. आज कल कोई आता क्यों नहीं यार? शायद टाइमिंग का इशू होगा, हर कोई इस टाइम पे फ्री ना हो, पर ये वाला टाइम ही है. चलो आगे बढ़ते हैं. Most people fail to realize that in life it's not how much money you make, it's how much money you keep. ठीक है, ज़िंदगी में ये नहीं तुम कितना पैसा बनाते हो, पर तुम कितना पैसा अपने पास रख पाते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं अगर 60,000 कमा रहा हूँ और उसके बाद भी मेरे पास कुछ नहीं बचा तो क्या कमा रहा हूँ? वी ऑल हर्ड स्टोरीज ऑफ लॉटरी विनर्स हु आर पुअर देन सडनली रिच एंड देन पुअर अगेन. हमने बहुत सारे मतलब बारे में सुना होगा लोगों के, उनका पैसा आता है, लॉटरी में लगाते हैं, पैसा आ जाता है अचानक से. पहले गरीब होते हैं, पैसा लगाते हैं लॉटरी में, पैसा आ जाता है, फिर अचानक से रिच हो जाते हैं, फिर अचानक से पुअर हो जाते हैं. दे विन मिलियंस, वो मिलियन जीतते हैं, येट आर सून बैक वेयर दे स्टार्टेड. और वहीं पर जहाँ गरीबी से शुरू किया था वहीं पे वापस चले जाते हैं. ऐसा क्यों? और स्टोरीज़ और ऑफ प्रोफेशनल एथलीट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं.
I remember a story of a young basketball player who a year ago had millions. मैं एक ऐसे बास्केटबॉल प्लेयर को जानता हूँ जो कि यंग था, 29 ईयर्स का था और उसके पास मिलियन ऑफ डॉलर्स थे. टुडे एट जस्ट 29 ही क्लेम्स हिज फ्रेंड्स अटर्नी एंड अकाउंटेंट टुक हिज मनी. और अब वो बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने और मेरे फ्रेंड के पास अटॉर्नी है और मेरा अकाउंटेंट मेरा पैसा ले गया. एंड ही वॉज फोर्स टू वर्क एट कार वॉश फॉर मिनिमम वेज. अब उसे गाड़ियाँ धोनी पड़ रही हैं. ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द कार वॉश बिकॉज ही रिफ्यूज टू टेक ऑफ हिज चैम्पियनशिप रिंग एज ही वॉज वाइपिंग ऑफ द कार्स. His story made national news and he is appealing his termination, claiming hardship and discrimination. He claims that the ring is all he has left and if it was stripped away, he will crumble. I know so many people who became instant millionaires, and while I am glad some people have become richer and richer, I caution them that in the long run, it's not how much money you make, it's how much money you keep. एंड फॉर हाउ मैनी जनरेशन यू कीप इट. और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जनरेशन तक उस पैसे को बचा के रखे हुए हो. इंडियन वुमेन बीट कजाकिस्तान वुमेन 5-0 बैडमिंटन फुटबॉल इन पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड 1. क्या बात है, बहुत अच्छी न्यूज़. सो व्हेन पीपल आस्क वेयर डू आई गेट स्टार्टेड और टेल मी हाउ टू गेट रिच क्विक, कैसे हम लोग यार इजीली पैसा कमा सके, ऐसा पूछ रहे हैं. दे ऑफ्टन आर ग्रेटली डिसअपॉइंटेड विद माई आंसर. वो लोग मेरे आंसर्स पे मतलब डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब मैं बताता हूँ. आई सिंपली से टू देम वॉट माई रिच डैड सेड टू मी. मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मुझे मेरे रिच डैड ने बताई व्हेन आई वॉज अ लिटिल किड. इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिच यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट. अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनना पड़ेगा. क्या बात है. दैट आइडिया वॉज ड्रम्ड इन टू माई हेड एवरी टाइम वी वर टुगेदर. और मेरे दिमाग में वो चीज़ खटकती रही जब जब हम साथ थे. एज आई सेड माई एडुकेटेड डैड स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स वाइल माई रिच डैड स्ट्रेस द नीड टू मास्टर फाइनेंशियल लिटरेसी. मेरे पापा कहते हैं कि भाई किताबें पढ़. जो मेरे पुअर डैड थे वो कहते थे भाई किताबें पढ़. पर मेरे जो रिच डैड थे वो बताते थे कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाओ. भाई फाइनेंशियल लिटरेसी जितनी बढ़ेगी उतना तुम्हारे लिए बेटर है. इफ़ यू आर गोइंग टू बिल्ड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, the first thing you need to do is dig a deep hole and pour a strong foundation. If you are going to build a home in the suburb, all you need to do is pour a 6-inch slab of concrete. Most people in their drive to get rich are trying to build an empire state building on a 6-inch slab. Our school systems, created in the agrarian age, still believes in homes with no foundation. Dirt floors are still the rage. So kids graduate from schools with virtually no financial foundation. One day, sleepless and deep in debt in suburbia, living the one day sleepless and deep in debt in suburbia, living in the American dream. They decide that the answer to their financial problem is to find a way to get rich quick. Construction on the skyscraper begins. It goes up quickly and soon. Instead of the Empire State Building, we have the leaning tower of suburbia. The sleepless nights return. As for the Mike and me in our adult years, both of our choices were possible because we were taught to pour a strong financial foundation when we were just kids. Accounting is possible, the most confusing, boring subject in the world. यहाँ पे बोला है कि अकाउंटिंग है ना बहुत कंफ्यूजिंग है, बोरिंग है, या फिर आप इसे बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है इस पूरे वर्ल्ड में ये सब्जेक्ट. बट इफ़ यू वांट टू बी रिच लॉन्ग टर्म, अगर आपको अमीर बने रहना है लंबे समय तक, इट कुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर रिच डैड. एंड द क्वेश्चन वॉज हाउ टू टेक अ बोरिंग एंड कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट एंड टीच इट टू किड्स. द आंसर ही फाउंड वॉज टू मेक इट सिंपली बाय टीचिंग इट इन पिक्चर्स. Rich people acquire assets, the poor and the middle class acquire liabilities that they think are the assets. My rich dad poured a strong financial foundation for Mike and me. Since we were just kids, he created a simple way to teach us. For years, he only drew pictures and used few words. Mike and I understood the simple drawing.
the jargon, the movement of money, and then in later years, Rich Dad begins adding numbers. Today, Mike has gone on to master much more complex and sophisticated accounting analysis because he had to in the order to run his empire. I'm not sophisticated because my empire is smaller, yet we come from the same simple foundation. Over the following pages, I offer to you and the same simple line drawing Mike Dad created for us. Though basic, those drawings helped guide two little boys in building great sum of wealth on a solid and deep foundation. रिच पीपल अक्वायर एसेट्स, जो इतने भी रिच लोग होते हैं वो एसेट वो करते हैं. द पुअर एंड मिडिल क्लास अक्वायर लाइबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स. रूल नंबर 1, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड बाय एसेट्स. आप लोगों को पता होना चाहिए क्या लाइबिलिटी है क्या एसेट है. कोई है ही नहीं आना रेगुलर टाइम पे विद कम्युनिटी पोस्ट एंड वेटिंग स्ट्रीम. ओके भाई, मैं सोच रहा हूँ अब 11 बजे ही आऊँ और बता कर आऊँ. 10 बजे तो कोई नहीं पहुँचा, कोई बात. रूल नंबर 1, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट, अ लाइबिलिटी एंड बाइंग एसेट. ठीक है, आपको पता होना चाहिए एसेट को ख़रीदना और लाइबिलिटी को ख़रीदना क्या होता है. इफ़ यू वांट टू बी रिच, दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो. अगर आपको अमीर होना है तो बस आपको यही जानना है. इट इज़ रूल नंबर 1, यही रूल नंबर 1 है और इट इज़ द ओनली रूल, और यही रूल है और कोई रूल नहीं है. दिस में साउंड एब्सर्डली सिंपल, आपको लग रहा हो बहुत सिंपल है, बट मोस्ट पीपल हैव नो आइडिया हाउ प्रोफाउंड दिस रूल इज़. मोस्ट पीपल स्ट्रगल फाइनेंशियली बिकॉज दे डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड ए लाइबिलिटी. बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है. रिच पीपल एक्वायर एसेट, जितने भी अमीर लोग होते हैं वो एक्वायर करते हैं एसेट्स को. द पुअर एंड मिडिल क्लास रिक्वायर लाइबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट. लोगों को लगता है कि जो मुझे चाहिए वो जैसे आईफोन है, दैट इज़ लाइबिलिटी. किसी के लिए लाइबिलिटी है, किसी के लिए वो एसेट है. ठीक है, मेरे लिए तो एसेट है भाई, क्योंकि मैं इसी से सारी वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ. सेड रिच डैड. When Rich Dad explained this to Mike and me, we thought he was kidding. Here we were, nearly teenagers and waiting for the secret to getting rich. And this was his answer. It was so simple that we stopped for a long time to think about it. What is an asset? Asked Mike. Don't worry right now, said Rich Dad. Just let the idea sink in. If you can comprehend the simplicity, your life will have a plan and be financially easy. It is simple. That is why the idea is missed. You mean all we need to know is what an asset is, acquire them, and we'll be rich, I asked. मैंने पूछा कि बस हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, यही जानना है कि क्या एसेट है और उस पर हमें कैसे उसे लेना है और हम अमीर हो जाएंगे. रिच डैड नोडेड हिज हेड. बिल्कुल सही. इट्स दैट सिंपल. If it's that simple, how come everyone is not rich? अगर ये इतना सिंपल है तो बाकी के लोग क्यों नहीं अमीर हुए? I asked. Rich Dad smiled. Because people do not know the difference between an asset and a liability. लोग इसलिए अमीर नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी है. मतलब क्या ज़रूरत की चीज़ है और क्या बस ऐसा हमें लग रहा है कि ज़रूरत है. जैसे पिज़्ज़ा खाना ज़रूरत नहीं है पर हम खाते हैं. I remember asking, how could adults be so misguided if it is that simple? If it is that important, why would everyone not want to find out? जब इतना important है तो लोग क्यों नहीं इसे find out करते हैं? It took Rich Dad only a few minutes to explain what assets the liabilities were. As an adult, I have difficulty explaining it to other adults. The simplicity of the idea escapes them because they have been educated differently. They were taught by other educated professionals such as bankers, accountants, real estate agents, financial planners, and so forth. The difficulty comes in asking adults to unlearn or become children again. An intelligent adult often feel it is demanding to pay attention to simplistic definitions. Rich Dad believe is the KISS principle, keep it simple, stupid.
or keep it super simple. So kept it simple for us and that made our financial foundation strong. Rich Dad ने बोला there is KISS principle, keep it simple, उसको simple रखो, simple and stupid, और keep it super simple. ठीक है, so he kept it simple for us and that made our financial foundation strong. So what causes the confusion? How could something so simple be so screwed up? Why would someone buy an asset that was really a liability? The answer is found in basic education. We found एक सेकंड रुकना है. So what caused the confusion? How could something so simple be so screwed up? Why would someone buy an asset that was really a liability? The answer is found in basic education. We focus on word. एक सेकंड गाइस, कॉल आ रहा है किसी का. अभिनव भाई इज ऑन द स्ट्रीम. हेलो अभिनव भाई, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल. किसी का मैसेज आ गया था, कोई कह रहा है कि अर्जेंट है. सो व्हाट कॉजेज कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन कहाँ है फिर? हाउ कुड समथिंग सो सिंपल बी सो स्क्रूड अप? वाई वुड समवन बाय एन एसेट दैट वॉज रियली अ लाइबिलिटी? द आंसर इज फाउंड इन बेसिक एजुकेशन. वी फोकस ऑन द वर्ड लिटरेसी. हम लोग फोकस करते हैं लिटरेसी पे एंड नॉट फाइनेंशियल लिटरेसी. फाइनेंशियल लिटरेसी की हमें कोई नॉलेज नहीं है, ना हम लेने की कोशिश करते हैं. वॉट डिफाइंस समथिंग टू बी एन एसेट और अ लाइबिलिटी आर नॉट वर्ड्स. In fact, if you really want to be confused, look up the words asset and liability in the dictionary. I know the definition may sound good to a trained accountant, but for the average person, it makes no sense. But we adults are often too proud to admit that something does not make sense. To us young boys, Rich Dad said, what defines an asset are not words, but numbers. And if you cannot read the numbers, you cannot tell an asset from a hole in the ground. In accounting, Rich Dad would say, it's not the numbers, but what the numbers are telling you is just like words. It's not the words, but the story the words are telling you. If you want to be rich, you have got to read and understand numbers. If I heard that once, I heard it 1,000 times from my rich dad, and I also heard the rich acquire assets and the poor and middle class acquire liabilities. मैंने अपने रिच डैड से बस एक ही चीज़ सीखी है, जो अमीर होते हैं वो एसेट एक्वायर करते हैं, जो गरीब होते हैं वो लाइबिलिटीज़, जैसे गाड़ी ख़रीद लेना, ठीक है, घर ख़रीद लेना, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी. पर एसेट कहाँ है? एसेट कुछ ख़रीदा ही नहीं. जैसे स्टॉक्स हो गए एसेट, जो कि आपको कल और पैसे बना के देगा. मैं तो बढ़िया हूँ अभिनव भाई, आप बताओ. 20 years ago today, learn, unlearn, relearn. पहले लर्न करो, अनलर्न करो, फिर रीलर्न करो. दिस कोट फ्रॉम फ्यूचरिस्ट एल्विन टॉफलर मिरर what Rich Dad told me ago. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and unlearn and relearn. मतलब 21st century के वो लोग क्या बोलते हैं, कैन नॉट रीड, उन्हें इलिटरेट नहीं माना जाएगा, जो कि लिख नहीं सकते और बोल नहीं सकते, सॉरी लिख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते. उन्हें इलिटरेट नहीं माना जाएगा. इलिटरेट उन्हें माना जाएगा जो लर्न नहीं कर सकते, अनलर्न नहीं कर सकते और रीलर्न नहीं कर सकते. लर्न मतलब किसी चीज़ को पढ़ना, किसी चीज़ को भुला देना और किसी चीज़ को दोबारा से लर्न करना. अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम इलिटरेट हो. अगर तुम ऐसा कर सकते हो तुम इलिटरेट नहीं हो.
There is how to tell the difference between an asset and a liability. Most accountants and financial professionals do not agree with the definitions, but these simple drawings were the start of strong financial foundation for two young boys. तो यहाँ पे एक डायग्राम ऐसा बना रखा है, आप लोग देख सकते हो अगर दिख रहा है तो आपको, ठीक है. दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ एन एसेट. इनकम स्टेटमेंट, यहाँ से एसेट गया इनकम, ठीक है. बैलेंस शीट एसेट, आपकी जो इनकम है वो एसेट में लगनी चाहिए. ओके. द टॉप पार्ट ऑफ द डायग्राम इज इनकम इन्वेस्टमेंट, often called a profit and loss statement. It measures income and expenses, money in and money out. The lower part of the diagram is balance sheet. It's called that because it's supposed to balance asset against liabilities. Many financial novices do not know the relationship between income statement and balance sheet. किसी को पता ही नहीं है क्या रिलेशनशिप है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का. एंड इट्स अ वाइटल टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप. क्यों बैलेंस शीट का एसेट और इनकम स्टेटमेंट का इनकम इंपॉर्टेंट है. So as I said earlier, my rich dad simply told two young boys, asset put money in your pocket. जो एसेट है वो आपकी पॉकेट में पैसा देगा, ठीक है. एसेट अगर आप बाय करते हो, अगर आप कोई अच्छी चीज़ बाय करते हो तो वो आपको पैसा देगा. बट अगर आप लाइबिलिटीज़ बाय करते हो तो वो आपके खर्चे बढ़ाएगा. सोचो, मैंने अगर एक ऑडी या फिर मर्सिडीज़ गाड़ी ले ली, ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते, पर अगर हमने ले ली तो क्या होगा. अगर हमने ले ली तो उसकी खर्चे बहुत हैं भाई. आप मान कर चलो उसकी एक सर्विस का कॉस्ट 40-50 हज़ार रुपये है मिनिमम, बता रहा हूँ मिनिमम. जो नॉर्मल सर्विस होती है वो अगर ब्रेक पैड वगैरह चेंज करवा दिए तो ख़त्म, 1-1.5 लाख कहीं नहीं गया, ठीक है. तो लाइबिलिटीज़ हो गई गाड़ी, और ऊपर से अब मैंने सोचो 1 करोड़ की गाड़ी ली, और 1 करोड़ की गाड़ी उसकी कॉस्ट डिप्रिशिएट होके 4 या 5 साल में वो मुझे 50 लाख में बेचनी पड़ेगी. तो ऑलरेडी मैं 50 लाख के लॉस में हूँ, प्लस ऊपर से हर साल मैं उस पर 1 या 1.5 लाख खर्च कर रहा हूँ, तो इससे मैं और गरीब हो जाऊँगा. तो हमें समझना होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क क्या है. एसेट, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख रुपए की, वो 4 साल बाद 1 करोड़ की हो गई, दैट इज़ एन एसेट. रियल स्टेट इज़ एन एसेट. फिर हम बात करें स्टॉक की, हमने कोई क्वालिटी स्टॉक खरीदा और वो आज के बाद 5 या 6 साल बाद वो 4 गुना हो गया, तो दैट इज़ एन एसेट. मैं भूल गया था कि 10 बजे स्ट्रीम है. त्रिशा चौधरी, हेलो, हाउ आर यू. मॉल कंठालिया चले गए इसी गम में कि हमारा कोई भी दोस्त नहीं आया. माफ़ी चाहूँगा, 2-4 दिन से हम लोग लाइव नहीं आ रहे थे. आप लोगों से मिलने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. मेरा मोटिवेशन ही आप हो, लोग हो, मतलब आपके बिना पढ़ाई कहाँ होती है. लोग कहते हैं भाई तू लाइव जाके क्यों पढ़ता है. मैंने कहा भाई मेरे साथ शशांक भाई, त्रिशा जी, अभिनव, मॉल कंठालिया, पिज़्ज़ा, ये सब लोग आते हैं तो जोश आता है पढ़ने में, वरना अकेले पढ़ने में मज़ा कहाँ है यार. मैं अकेले पढ़ने की कोशिश की थी, एक रिकॉर्डेड सेशन किया था, उसमें भी मुझे नींद आ गई भाई, आधे घंटे के अंदर नींद आ गई. पर यहाँ पर बैठकर जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे मतलब जोश आता है. Now that asset and liabilities have been defined through pictures, it may be easier to understand my definition in word. An asset is something that puts money in your pocket whether I work or not. एक asset ऐसी चीज़ है चाहे तुम ज़िंदगी में काम करो या ना करो, तुम्हारी जेब में पैसा आएगा ही आएगा. A liability is something that takes money out of your pocket. और एक लाइबिलिटी ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में तुम्हारी जेब से पैसा खींचता ही जाएगा चाहे तुम कुछ भी करो. This is really all you need to know. If you want to be rich, simply spend your life buying or building assets. If you want to be poor or middle class, spend your life buying a liability. अगर आप मिडिल क्लास और गरीब रहना चाहते हो तो लाइबिलिटीज़ में पैसा खर्च कर दो. Illiteracy, both in words and numbers, is the foundation of financial struggle. If people are having difficulties financially, there is something that they don't understand either in words or numbers. The rich are rich because they are more literate in different areas than people who struggle financially. So if you want to be rich and maintain your wealth, it is important to be financially literate in words as well as numbers. The arrow in the diagrams represent the flow of cash or cash flow. Number alone mean little, just as words out of context mean little. It's the story that counts. It's in financial reporting.
Reading number is looking for the plot and story of where the cash is flowing. In 80% of the most families and financial story paints a picture of hard work to get ahead. However, this effort is for not बिकॉज दे स्पेंड देयर लाइफ बाइंग लाइबिलिटीज इंस्टेड ऑफ एसेट. ठीक है, हम सिखाते हैं कि भाई कि फाइनेंशियल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए भाई. पर अगर तुम हार्ड वर्क करोगे और सब ऐसी चीज़ें खरीद लोगे जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, दे ऑल आर लाइबिलिटीज़. गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी से आपका ही मतलब कुछ थोड़ा सा आपका सफ़र आसान हो जाएगा, बट उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, उसका खर्चा, उसका बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, कुछ लोग एकदम से 1 करोड़ का घर खरीद लेते हैं फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि सारा पैसा आपको रियल एस्टेट में लगा देना है. चीज़ों के बारे में समझना होगा. ठीक है, थैंक्स अलॉट दोस्तों. पेज नंबर 85 तक हम लोग पहुंच चुके हैं. फिर कल हम और भी अच्छी बातें करेंगे इस बुक से रिलेटेड. इसकी भाई 20 साल से बहुत ऑल टाइम फेवरेट रही है हर किसी की. चलो कल बढ़ते हैं आगे. भाई मैं ऑफिशियल चैनल में पहाड़ी ब्रदर्स कर रहा, वहाँ मेरा मैसेज दिखाई नहीं दे रहा, एक बार चेक करो ये ना क्या प्रॉब्लम है. चलो त्रिशा जी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वहाँ पे शायद आपके मैसेजेस किसी ने आपको ब्लॉक तो नहीं कर रहा, मैं देख लूँगा. थैंक्स अलॉट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.